Any doubt? Someone raised hand. So you can always interrupt if you have any doubt. If I will explain it then or later, you can always ask doubt anytime. Okay. So let us solve it together. And those who have started, they see what approach they adopted. Okay. So yes. Hello. Any problem? Anyone? So problem is like this. Find. Okay. So first of all, write down what is to find. Okay. What क्या find करना है हमें? To find. Let us write it down. Initial velocity. So initial velocity we say u. Okay. And corresponding angle of projection of a projectile. So with initial velocity, we have to find out angle of projection alpha such that when a projectile is projected from the ground, it just clears a wall 4.5 meter high at a horizontal distance of 6 meter. So the distance between that wall and the point of projection is 6 meter. What is the condition given? So suppose this is point of projection, say point O, and say this is point of strike. Okay. So from point of projection at a distance of 6 meter, at a distance of 6 meter, there is a wall. यहाँ पे एक wall है. Say this is that wall. Okay. Now what you did, you projected something from the ground. It is kept on the ground like this. ऐसा आपने project किया in the air with some velocity u. Okay. And say angle alpha. So what is the height of this wall given? 4.5 meter. So this height is nothing but 4.5 meter. So when it is projected, the projectile goes into the air such that it just clears the wall. ये जो wall है इसको touch नहीं करेगा, ठीक है? Just wall के above से वो pass होता है. आपने इसे throw किया, wall को touch नहीं किया, but it just cleared the wall. Okay. So it goes like this, and after its time of flight is over, it comes back to the ground at point of strike. It's like this. It is like this the problem is. Getting it? Okay. So what is this 6 and what is this 4.5 meter? You have to make use of this data. 6 meter and 4.5 meter. Definitely 4.5 meter is not the maximum height. So after
after clearing the wall, it again goes higher in the sky, and after the maximum point, it comes back to the ground like this. So this much information is given to you so far. Let us read further. 4.5 meter high wall at a horizontal distance of 6 meter, and finally it lands on the ground. The projectile lands on the ground at a distance of 35 meter beyond the wall. At a distance of 35 meter beyond the wall. It is given as beyond the wall. So this distance wall से इसका distance होगा 35 मीटर. Am I right? Finally, it lands on the ground at a distance of 35 meter beyond the wall. This 35 is given a total distance, or it is the distance beyond the wall. So it should be, I think, total distance. 35 is nothing but your total distance. The wording is that it falls beyond the wall. Okay, so that wording should not confuse. So see, erase. I will erase it. Okay. So it is nothing but a total distance. This distance is given to be as 35 meter. Okay, and this point is obviously beyond the wall, not before the wall. So what is 35? You can write down that 35 is nothing but range of the projectile, which is given as 30. Range is given as 35 meter. So with this much information, आपके पास देखो क्या क्या है. हॉरिजॉन्टल रेंज दिया है. ओके, ये डिस्टेंस दिया है, वॉल का डिस्टेंस और वॉल का हाइट. ओके, फ्रॉम द point of projection. So if you remember, it is the path of the projectile, parabolic. And if I have to write down that what are the coordinate of these points, x and y. Okay, so this x and y, this particular point. Okay, if you say what is the x coordinate of this point, that is nothing but 6 meter, right? Y is the height of this point from the ground, so that is 4.5 meter. Okay, so which information we have to use? The 6 meter, 4.5 meter, that is xy coordinate of this point, and range. Okay, in order to find these two parameters, initial velocity and angle of projection. Okay, so if you go back and see that which formula do I have, in which I will find x and y and r. So range का एक formula है, so I can write down that range formula is given. We have range का formula. What is the range का formula? बोलो, रेंज का फॉर्मूला क्या है? u square sin of 2 theta by g. 2 theta by g. So we are using alpha here. U square sin 2 alpha by g is our first equation which we have to use. Okay, so here in this equation
R is known to us. R is known to us. U and alpha are unknown. U and alpha are unknown. So this equation, this is the first equation which we have in terms of U and alpha. Two unknowns hai. To solve these two unknowns, to find the two unknowns, we must have two equations. तो ये पहला इक्वेशन तो मिल गया हमें रेंज का. Excuse me, sir. Yes. Sir, we can use trigonometric equation formula and find out alpha. Which trigonometric formula? Means tan alpha is equals to 4 upon 5 But it is upon 6. parabola ना. Are you getting it? ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. ये क्या है? ये कर्व है. एंड दैट कर्व कौन सा है? नॉट सर्कल, इट इज द पैराबोलिक कर्व. पैराबोलिक कर्व. We have proven that the trajectory path of the projectile is parabolic. Okay, and the equation of the parabola is also, we also have y equal to, okay, क्या इक्वेशन था पैराबोला का which we obtained? y equal to, बोलो. X tan alpha Yes, x tan alpha minus gx square upon 2u square cos square alpha. minus g x square upon u square. 2u square cos square alpha. Correct. 2u square cos square alpha. It is our second equation. So यहाँ से u and alpha unknown है. g का वैल्यू तो पता है 9.81 है. Okay. Here in this equation, second equation, y value कितना है? Y value is given here 4.5 4.5. and x value is 6. Okay. Here put the values in pair x, y. This is equal to, okay, x का वैल्यू है 6, y का वैल्यू है 4.5. Any point on this parabolic curve, any point on this parabolic curve will satisfy this equation. कोई भी point लो आप, यहाँ पे, तो x y का जो pair मिलेगा, those have to satisfy this equation. So in this equation, y and x are known to us. What is unknown? Alpha and u. Alpha and u is unknown. So again, we got another equation, okay, in which u and alpha are unknown. Okay, so we have two equations, two unknowns. We can find out it. What is the value of alpha? What is the value of u? Okay, so first what I will do, from equation 1 I will find the value of u square. U square का कितना value है? ठीक है. From equation 1 I will find out that, and I will put the value of u square in equation 2. So finally I will get one equation in which only alpha will be unknown. I can solve that and I can find out the alpha. Okay, so let us solve it further. So from equation 1, okay, from equation 1 I can write that u square is equal to, r का वैल्यू कितना है? रेंज 35 इंटू जी. जी का वैल्यू कितना है? दैट इज 9.81. r इंटू जी, और ये साइन जो है ये इसमें चला जाएगा डिनोमिनेटर में. सो आई गेट साइन ऑफ 2 अल्फा. Okay, this is the value.
कितना आता है ये 35 इंटू 9.81 3 समथिंग कितना है 334.34 3.30 like this, so it is your no sine 334.343, 343 right? 343.3 So I will correct it. Okay, so it is 343 point something 35. 35. So I will put the value of u square here in second equation. Okay, put in equation 2. So what I will get y is what, y का value कितना है 4.5 is equal to x is 6 tan alpha minus g का value 9.81 multiplied by x का square, x is 6 upon 2 into u का स्क्वायर, u का स्क्वायर ये यहाँ पे निकाला है हमने, u का स्क्वायर ये है sin of 2 alpha. So just put this value here 343.35 upon sin of 2 alpha multiplied by cos square alpha. Here it will write, you will write cos square alpha. So this equation आपको solve करना है, this equation. So यहाँ पे what is the formula for sin 2 alpha? That is 2 sin alpha into cos alpha. So what will happen? 1 cos alpha will get cancelled. इससे cancel हो जाएगा 1 cos alpha and sin alpha will go up. तो sin alpha upon cos alpha tan alpha हो जाएगा. So आप easily you can calculate alpha value here. Just put sin 2 alpha. What is the formula for sin 2 alpha is equal to 2 sin alpha into cos alpha. ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है. तो ये साइन, ये वाला जो साइन है ये ऊपर चला जाएगा इन न्यूमरेटर एंड दिस cos अल्फा ये इसका एक पावर कैंसिल करेगा एंड sin अल्फा अपॉन cos अल्फा विल बिकम tan अल्फा. सो यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. देन बताओ कितना वैल्यू आ रहा है.
सर यस, सर एक डाउट था सर कि सर हमको ये जो पोजीशन दिया है 6 और 4.5 उससे हम लोग अल्फा निकाल नहीं सकते, वो समझ में नहीं आया। अभी देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं पैराबोला जरा आपको अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, तो जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोला बनती है, इसे आपको पता है। सो फर्स्ट जब आप उसको थ्रो करते हो, व्हेन यू थ्रो द प्रोजेक्टाइल, एट दैट टाइम उसका जो एंगल होता है दैट इज डिफरेंट एंगल अल्फा। अभी यही एंगल अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करोगे आप, तो यहाँ पे एंगल जो है वो चेंज हो रहा है, प्रोजेक्टाइल का एंगल चेंज हो रहा है। फिर अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ तो नेगेटिव हो जाता है अल्फा। अल्फा इज नॉट कांस्टेंट। आप जो tan अल्फा का फार्मूला यूज कर रहे हो वो आप ट्रायंगल के लिए यूज कर रहे हो। आप क्या सोच रहे हो कि ये एक लाइन है, आप क्या सोच रहे हो कि ये पॉइंट ओ, और आप सपोज ये पॉइंट है पॉइंट पी, तो आप सोच रहे हो कि पॉइंट ओ और पॉइंट बी एक लाइन है, बट वो लाइन नहीं है, वो एक कर्व है। गेटिंग इट? यस सर हाँ। हाँ, ये ऐसे कर्व है, तो हमने बीच में एक लाइन बना दिया है कि जो वॉल है वो इसको छू कर नहीं जाता है, थोड़ा दूर पास से जस्ट क्लियर करता है उसको, ऐसे एकदम स्लाइटली उसके पास से गुजरता है। समझ में आया? हाँ यस सर। ओके, तो कितना मिला वैल्यू अल्फा का? 41.98। ओके, सभी लोग चेक करो आप, 41.98 एंगल आता है इसका। ये यहाँ पे इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, साइन 2 अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में tan अल्फा मिल जाता है। सब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद tan अल्फा, तो यहाँ पे भी tan अल्फा है, तो आप इसको प्लस माइनस इजीली कर सकते हो। ओके, और बाद में यू यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा का वैल्यू बाय द इनवर्स tan फंक्शन। तो ये आपको अल्फा मिल गया यहाँ पे। Once you know the alpha, it is your answer. If you remember, we have to find out the angle of projection. So you can highlight this. This is the answer you found. And once you find the angle of projection, you find out the initial velocity. आपको जो पूछा है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, यू फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। जो भी फाइंड आउट करना है ना हमें, सो यू कैन राइट डाउन u स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन है, 343 अपॉन साइन ऑफ 2 अल्फा, साइन ऑफ 2 इंटू अल्फा, दैट इज 41.98 degrees. So by solving and taking square root, you will find out the initial velocity of the projectile, कितना वेलोसिटी से उसको थ्रो किया था। Again, if time runs out, you have to join back immediately. अभी 2 क्लासेस साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसलिए we don't have the licensed version with us. One more problem we will solve today.
Please put down your attendance also in chat box. Few seconds are remaining. You have to join back again. Sir, Yes. sir, value of U is 18.57 something.